आपने कोविड का जिक्र किया तो ये जो पूरा पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आप लोग काफ़ी एम्फेसिस दे रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक आर्सेनल में ये एक बहुत बड़ा वीपन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी दोस्तियां बढ़ाने में। इस पर क्या काम चल रहा है इस वक्त? हम समझते हैं कि बहुत सारे देश इसको लेना चाहते होंगे। देखिए, जब मैं दौरे में जाता हूँ दुनिया भर, जब विदेश मंत्री जाते ही हैं बाहर, हमारा काम ही बाहर है, तो ये बात जो है मैं देख रहा हूँ पिछले सालों में बहुत सारे देश हमसे बात करते हैं कि वो तो उनके लिए एक आश्चर्यजनक भी है, पर उनको लगता है कि भाई हमें आप जो आपका एक्सपीरियंस है हमें भी बताइए। और जो बहुत सारे चीज़ जो हैं वो माने खाली भारत में नहीं होते। अब जो लीकेज जो हो रहा था, ये हमारे यहाँ लीकेज हो रहा था पहले, बट ये हाँ उनके यहाँ भी होता है। तो जब वो देखते हैं कि जैसे अब हम जो अनाज की डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं या हेल्थ कवरेज जो होती है या हाउसिंग जो होता है, तो हमारे जो स्कीम्स जो हैं और जिस एफिशिएंसी से ये स्कीम्स जो होती हैं, जिस स्केल से ये स्कीम्स जो होती, उनके लिए एक किस्म से ये मैं कहूँगा उदाहरण भी है, पर उनको लगता है, उनको प्रोत्साहित भी करता है, ज़रूरत भी है, ज़रूरत है, पर उनको लगता है कि ये संभव है क्योंकि भारत ने करके दिखाया है। तो हम जो हैं टुडे वी आर एक्चुअली इन मैनी वेज, यू नो, I would say it should come out right. I mean, in a way, example भी है, motivation भी है, solidarity भी है, और ये है कि in a way it's a new method of solving old problems. Right. That in many cases our delivery जो है it is commensurate with that of the most developed parts of the world. So there is today a lot of interest in digital India, in digital based delivery. People look at the numbers. Okay. Let us take Anna Yojana, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, food support program. Our food support program covers 800 million people. Yeah. Okay. 800 million people is twice the size of Europe. It's almost the size of entire Africa. Today, if you look at Jan-Dhan covers 500 million people, 50 crores. Yeah. That is, 50 crores is half the size of Africa. True. Okay. If you look even at something like Awas Yojana, that today, if you look at beneficiaries of Awas Yojana, that's 150 million people who got houses. Right. This is astonishing data that 4 billion people do not have an identity card or identity number. So India can really do a lot globally. No, one part of it is to build identity, to build the digital delivery, to have in place the systems, to have the leadership and the visualization of this, and have the commitment to do that. So if you look at any of our programs, you know, our programs are actually, every program, I can give you a country which will relate. You know, you look at our Ujjwala program, that is the size of the population of Germany. Right. You look at even our Awas Yojana. Awas Yojana is the size of, it's like housing entire Japan. So every one of our programs is actually the size of a country. As I said, you know, Anna Yojana is like feeding North America and Europe at the same time. So we have to understand other countries today are watching us. See, part of G20, because I'd like to come back to G20. Why is it 125 countries were so I would say, committed and interested in talking to us? Because they feel that a country like India, which understands the problem of the developing world, which has that sense of sincerity and a willingness to table those issues, which is today calling a conference, because Pradhan Mantri ने ये Voice of Global South conference बुलाया था, 125
देश आए थे उनके लिए. 125 nations came. In the entire G20, we've never had a G20 chair who called all the countries not in the G20 and said, please come sit with me and tell me what are your problems, because I want to take your problems out there and put it before the rest of the G20. That is a very new New phenomena, yeah.